Yes, sir. that if this, yeah, yeah, do you have any problem? सर आपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि डेरिवेटिव की जो हाँ, एक्चुअल डेफिनेशन है उसको न दिखाने के बजाय अगर हम ये दिखा दें कि रिमाइंडर टर्म की लिमिट 0 हो रही है तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों हाँ, हाँ, आपस में रिलेट कैसे करें? अच्छा, अभी मैं चर्चा करता हूँ उसकी, अभी चर्चा कर रहा हूँ. ओके, ओके, yeah. So actually, I stated that if f is a function from some open set u of Rn to Rm, and suppose x0 is a point in u, then f is said to be, I'm just writing the definition, differentiable at x0 if there exists a linear transformation A from whole Rn to Rm, whole Rn to Rm, such that such that this limit exists, such that this fx0 plus h minus fx0 minus ah and divided by norm of h, this is equal to 0, this limit h tending to 0. क्या, तो ये हमने बताया था कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे तो हम ये जो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी ए को हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ एफ एट द पॉइंट एक्स जीरो. इसके बहुत सारे वर्जन हैं. एक वर्जन ये भी है कि अगर इस पूरे के जगह पे आप आर एच लिख दीजिए, मान लीजिए पूरा आर एच है, तो क्या होगा? तो दिस एफ एक्स जीरो प्लस एच माइनस एफ एक्स जीरो minus ah, suppose this is equal to rh, what is called some remainder function, remainder function, this rh. तो और हमने कुछ नहीं किया, केवल इसके जगह पे rh लिख दीजिए. अगर इसको rh पुट करेंगे तो क्या होगा? इस fx0, आप ये कहिए कि fx0 plus h can be written as fx0 plus ah plus rh, where this norm of rh divided by norm of h, this is equal to 0 when limit h tending to 0. That's all. इसमें क्या दिक्कत है? केवल इस पूरे न्यूमिनेटर की जगह पे हमने आर एच लिख दिया और ये कहा कि दिस आर एच अपॉन एच टेंडिंग टू 0 व्हेन एच टेंडिंग टू 0. इज इट ओके नाउ? जिसको प्रॉब्लम था क्लियर हुआ कि नहीं? अभी केवल इस न्यूमिनेटर की जगह पे हमने आर एच, इसको एक कह लिया नॉमेनक्लेचर हमने दिया, इसको एक नाम दे दिया, दूसरा सब्स्टिट्यूशन जैसे हम लोग करते हैं ना, उसी तरह सब्स्टिट्यूशन हमने कहा. सपोज दिस इज इक्वल टू आर एच, सो instead of saying this whole numerator upon denominator tending to 0, h tending to 0, we'll say that this rh upon h tending to 0 equal to 0, where rh is equal to this, or fx0 plus h is equal to fx0 plus ah plus rh. इसको आप और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं. इसको एक लिखने का तरीका है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई कहे कि say some function fx x tending to say c in one variable is equal to say some limit a, or you can call for continuity is fc. So you also say in terms of epsilon delta that for every positive epsilon there exists a positive delta, such that whenever this x minus c less than delta, this implies this fx minus fc is less than epsilon. So this is the definition of continuity of the function. या अगर केवल यहाँ पे लिमिट a लिखते हैं तो यहाँ पे fx minus a हो जाएगा. यहाँ पे है कि ये जो होल क्वांटिटी है, इस पूरी क्वांटिटी का जो लिमिट है वो 0 हो रहा है. तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं,
So you can also say that, and in this case also this a is equal to this derivative of function at the point x0. So इस a को आप replace कर सकते हैं by f dash x0, right? Okay. Okay. So what we say here, you can also ये x0 plus h जो है, ये बेसिकली आप इस तरह समझें, ये आपका ओपन सेट U है और इस ओपन सेट में ये आपका पॉइंट एक x0 है जो कि Rn का एलिमेंट है, इसके n कंपोनेंट्स है. यू शुड थिंक ऑफ एज ए एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस. और h भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो दैट दिस x0 plus h, दिस इज आल्सो ए वेक्टर, एक नंबर है, ये Rn का एलिमेंट है. h भी जो है इसके n कंपोनेंट्स है, h1 h2 h3 h. अगर इसको आप x कह दीजिए, सपोज दिस x0 plus h is a general point x, so if you put x is equal to x0 plus h, इसी एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस नॉर्म ऑफ fx minus fx0, and so you may put this x0 plus h as the general point x, and minus this a and x0, x minus x0, because h is equal to x minus x0, and this norm, and whole divided by this x0 minus x minus x0, and limit of this thing, this tending to 0 as x approaches x0, as h tending to 0 means x tending to x0. तो जैसे जैसे x x0 को अप्रोच करेगा, इस पूरी क्वांटिटी का लिमिट 0. सो दिस इज द अनदर वर्जन ऑफ दिस डेफिनेशन. इसको डेफिनेशन का दूसरा वर्जन कह सकते हैं कि इसके जगह पे आप यहाँ पे h लिख रहे थे, आप चाहें तो इसको जनरल पॉइंट x के टर्म में लिख सकते हैं कि इफ there exists a linear transformation A such that fx minus fx0 minus a x minus x0 divided by this norm of x minus x0, if this tending to 0 as x tending to x0, we say that this limit, we say that this function is differentiable at x equal to x0, and this a is the derivative of the function. Okay. In terms of this epsilon delta, you can also write that for every positive epsilon, so this f is said to be differentiable. F is said to be differentiable at point x0 if for every positive epsilon, so this is a real number. Remember, this epsilon is a real number. There exists a delta, which is again a real number. There exists a delta such that whenever your point x minus x0 less than delta, it means whenever this x belongs to, you can write either x minus x0, this norm less than delta, or you can also write this x belongs to this open ball centered at the point x0 and radius delta. And also, of course, it should belong to the domain. So this intersection U, you may think of, and this should imply that this whole limit, this fx minus fx0 and minus this a times, or you can say f dash x0, maybe you write a. So x minus x0, and this should be less than epsilon into this x minus x0. So this should be less than this x minus x0, or you can say epsilon into maybe x minus x0. So that when you divide this whole thing by this norm of x minus x0, this should be less than epsilon. तो आप इस डिफरेंशियबिलिटी के डेफिनेशन को इस तरीके से भी एप्सिलॉन डेल्टा के टर्म में लिख सकते हैं कि दिस f is said to be differentiable at the point x0 if for every positive epsilon there exists a delta, and of course you need a linear transformation A from Rn to Rm such that whenever you take
a point in this intersection, in this open set and intersection with this open ball centered at delta, this inequality should satisfy that this fx minus fx0 minus a times x minus x0, a operates on x minus x0, in fact it should be less than epsilon x minus x0. तो अभी हमने जो कल थ्योरम स्टेट किया था कि जो एक तरह का सफिशिएंट कंडीशन बताएगा इस एफ की डिफरेंशियबिलिटी के लिए, क्योंकि इसके पहले जो थ्योरम हमने प्रूव किया उसमें हमने कोई कंडीशन है, हमने मान लिया कि एफ डिफरेंशिएबल है। अगर एफ डिफरेंशिएबल है तो उसके डेरिवेटिव को हम पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में लिख सकते हैं। इफ एफ इज डिफरेंशिएबल, ये पहले से आप मान लें कि एफ अगर डिफरेंशिएबल है तो उसके डेरिवेटिव को, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में लिख सकते हैं। और फाइनली आपको एक जैकोबियन मैट्रिक्स मिला। ये जो नेक्स्ट थ्योरम जो हमने स्टेट किया था लेकिन उसका प्रूव नहीं किया था, वो एक सफिशिएंट कंडीशन आपको देता है कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव किसी पॉइंट x0 पे एग्जिस्ट करे और साथ साथ कंटिन्यूअस हो जाए, the partial derivative exists and continuous, then the function is differentiable. तो हमको ये दिखाना है बेसिकली कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो उस पॉइंट x0 पे, तो हम ये दिखाएंगे कि ये जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई करेगी। ओके, सो प्रूफ। So this f was function from this Rn to Rm. x0 is a point in U, and it is ये दिया गया है कि this del f upon del xj. Del f upon del xj means the partial derivative of all its components. Actually, f also has m components. This fx is actually equal to this f1x, f2x and dot dot fmx. और भी अगर इसको एक्सप्लिसिट लिखना चाहें तो चूंकि x भी एक वेक्टर है, x के n कंपोनेंट, तो बेसिकली if you write in more explicit way, this f is actually function of x1, x2, xn, and it has m component in range, and each component is actually function of x1, x2, xn, x1, x2, xn. And similarly, this f2 function of x2, x2, xn, and dot dot and so on. This fm also function of x1, x2, xn. So this is the more explicit way to write this function. तो ये del f upon del xj कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी ये कंपोनेंट फंक्शंस हैं, इन सभी के पार्शियल डेरिवेटिव कंटीन्यूअस हैं। So this del f upon del xj, this is continuous. This is continuous. It is given that it's continuous at the point x0. Right? So what it means that for any positive epsilon, there exists a positive number delta, but because we are considering this jth partial derivative, I am considering delta j. So for each j, for j is equal to 1, it's delta 1, for j is equal to 2, delta 2. So in this way, there exist n numbers, delta 1, delta 2, delta n, such that whenever you take a point x in this ball centered at the point x0 and radius delta j, and you can write intersection u. This implies you can always write this intersection u, so maybe I am not repeating this. अगर कहीं छूट गया तो आप लोग समझिएगा u जरूर है यहाँ पे, क्योंकि जब u के बाहर हो गया तो कोई मतलब नहीं लेने का. So whenever this implies that this del f upon del xj, del f upon del xj and del f upon del xj at the point x0, this should be less than epsilon. ये चूंकि फंक्शन जो है एग्जैक्टली हमने कंटिन्यूटी का डेफिनेशन केवल लिख दिया. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी. So here is also you can write the NOR instead of taking mod. This is actually NOR. पर चूंकि हमें जरूरत है कि इसमें कुछ हम मैनिपुलेट करें, so I'm just manipulating here for some particular reason, जैसा कि पहले से भी हम लोग करते आए हैं. तो यहाँ हम
एप्सिलॉन की बजाय n into m भी ले लेंगे, because this is also a positive number, and once for epsilon there is a delta j, for this number also there is delta j. So instead of taking for this epsilon, I am considering for this epsilon upon nm. So for epsilon upon nm there is a delta j to satisfy this condition. Now suppose this delta is the minimum of, because there are only finite many numbers, so there exists minimum. So of delta 1, delta 2, delta n. So it means if you considering, this ball is centered at the point x0, and one is of radius delta 1, delta 2, delta 3, delta 4. इनमें जो सबसे मिनिमम है उस बॉल के अंदर अगर आप लेंगे तो सभी j के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. So it means if you considering this ball centered at x0 and radius delta, this condition is true for every j. So this implies that, so this x belongs to this ball centered at centered at x0 and radius delta intersection u. This implies that this del f upon del xj, x minus del f upon del xj at the point x0, this is less than epsilon upon nm, and this is true for each j. This is true for each j lies between 1 to n. J lies between 1 to n. Right? Is it okay to everybody up to this stage? Yes, sir. Yes. Okay. Now suppose your x is here. ये आपका एक बॉल है जिसका सेंटर आपने लिया है x0, और x कोई पॉइंट आप ले रहे हैं जो इस x0 को अप्रोच कर रहा है. जैसा कि हमने अभी पिछले पिक्चर में भी बताया था कि अगर इस x माइनस x0 को आप चाहें तो एक वेक्टर h मान सकते हैं, और इस h वेक्टर के कंपोनेंट्स आप चाहें तो ले सकते हैं. दिस h1 h2, आप चाहें तो कंपोनेंट ऊपर लिख रहे हैं तो ऊपर ही लिखिए h1 h2 hn. These are component of this vector h1 h2 hn, so that you can also write this. So let this x minus x0 is equal to h, and this h is in fact this h1 e1 plus h2 e2 plus dot dot hn en, so that you can think of this h as in vector form h1 h2 dot dot hn. Right? And now you see the norm of this x minus x0, this is also equal to the norm of h, and is actually equal to, you just use the definition of norm. This is h1 square plus h2 square plus dot dot hn square. So for this expression, it is clear that this each hj, अगर ये सभी h1 h2 hn अलग अलग रियल नंबर्स हैं, तो each hj is actually less than equal to this norm of h. Is it okay? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि norm of h is equal to square root of h1 square h2 square hn square. तो एक कंपोनेंट, बाकी कोई भी अगर इसमें स्क्वायर नंबर है तो पॉजिटिव ही होगा, ऐड करेंगे इट विल बी ग्रेटर. सो इफ यू कंसीडर exactly 1, this will be definitely less than equal to norm of h. Or you can also say this norm of h is actually equal to norm of x minus x0. Right? So this is true for every j. For every j lies between 1 to n. Okay. Now, सर हेलो. हाँ सर, जो ऊपर सर एक j बिलोंग्स टू लिखा तो वो 1 to m है. n जहाँ j आपने लिखा है ना, ये सब डोमेन के हैं सब कंपोनेंट. जहाँ कंपोनेंट ये x कंपोनेंट सब डोमेन का है, डोमेन में n है. और जहाँ ये रेंज वाला आएगा ना f1 f2 f, अभी रेंज की बात, रेंज को हमने कहीं ब्रेक अभी किया नहीं है, अभी रेंज को ब्रेक नहीं कहीं किया है. जब रेंज को ब्रेक करेंगे वहां पे हम m कंपोनेंट लाएंगे. फिलहाल अभी जहां भी वेरिएबल है वो n वेरिएबल्स हैं. अब नेक्स्ट स्टेप में हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम उसको भी ब्रेक करने जा रहे हैं. हम हर कंपोनेंट के लिए बेसिकली हम मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करने जा रहे हैं. फॉर ईच कंपोनेंट
this say fi. So considering this ith component of this f, so considering this vector, this function, in fact, real valued function, this fi, ith component, and which is also function of n variable actually, f1, x1, x2, xn. तो ये जो पॉइंट x0 है, तो इस x0 पॉइंट पे fi, ये सभी f1, f2, f3, fm, ये सभी m फंक्शंस जो हैं वो सभी rn के फंक्शंस हैं, rn पे डिफाइंड है in dimensional space पे. So this is also a real valued function of n variable. Now I am considering this mean value theorem for this function in just one variable. बाकी n-1 वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हुए केवल वन वेरिएबल में हम मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करना चाहते हैं. मान लीजिए फॉर द मोमेंट हम x1 वेरिएबल में अप्लाई करना चाहते हैं. सो लेट अस कंसीडर द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर दिस फंक्शन fi इन द फर्स्ट वेरिएबल. मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? लेट अस रिमाइंड इट. तो अगर कोई फंक्शन जो है किसी वन वेरिएबल केस में, अगर क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है, से ए बी, एंड ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, तो बीच में आपको एक पॉइंट ऐसा सी मिलेगा such that this fb minus fa and upon b minus a, this is equal to f dash c. So c is some point in this open interval AB. There exists at least one point C, maybe more than one point, but at least one point should be here. या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, this FB minus FA, and this is equal to this F dash. You can say this A plus H into this B minus A into this B minus A into this B minus A. मान लीजिए B minus A का ये जो डिफरेंस है इसको हम H कह दे रहे हैं. सपोज B minus A is equal to H, तो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. तो इस पूरे इंटरवल का लेंथ हम H कह रहे हैं. So let us consider here some T times H. That is when T is equal to 1, this is actually equal to A plus H. So A plus HT into H, where H lies between, T lies between 0 and 1. Is it okay? This T lies between 0 and 1. T lies between 0 and 1. तो दूसरे शब्दों में आप मीन वैल्यू थ्योरम को इस तरह भी स्टेट कर सकते हैं कि अगर F कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल AB में और ओपन इंटरवल AB में डिफरेंशिएबल है, तो एक पॉइंट आपको T मिलेगा इन इंटरवल 0-1. एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा 0-1 such that this FB minus FA is equal to F dash A plus TH into H. Is it okay? Yes sir. इसी को आप हायर डायमेंशन में इसका एनालॉग लिख सकते हैं. अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन है जो n वेरिएबल का फंक्शन है, से x1, x2, xn, x1, x2, xn, और इसके वन वेरिएबल में हम केवल मीन वैल्यू थ्योरम को यूज करना चाहते हैं. लेट अस से दिस फर्स्ट वेरिएबल. तो आप लिख सकते हैं कि सपोज f इज differentiable in the first coordinate, that is partial derivative. फर्स्ट कोऑर्डिनेट में डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और साथ ही साथ फंक्शन कंटिन्यूअस है. ये भी एक कंडीशन होना चाहिए. दिस एफ शुड बी कंटिन्यूअस along this x1 coordinate and it should be differentiable along that coordinate. It means partial derivative exists. Partial derivative in that direction, that is in first direction, exists. Then so suppose your point is, first point is x0 here, x0, and
along suppose x1 axis I am considering the derivative. तो इसको आप लिख सकते हैं this is your x0 plus, consider this vector h1e1, h1e1, क्योंकि h1 हम सफिक्स ऊपर लिख रहे हैं इसलिए हम ऊपर सफिक्स लिख रहे हैं h1e1, h1e1, right? So what will be the analog of mean value theorem here? So this fb minus fa, तो f हो जाएगा आपका x0 plus h1e1 minus fx0 minus fx0. This should be equal to this partial derivative of this f along this first variable, partial derivative of f along first variable, and here just like this a plus th, you can write this x0 and plus some number, say ti times this e1 is a vector, e1 is the vector along first coordinate, into this h1, where this ti is some number between 0 and h1. Is it okay? So basically, actually, I need for this ith component vector. So maybe you also consider here ith component. So this is the analog of mean value theorem for this ith component. So fi x0 plus h1e1 minus fi x0 is equal to partial derivative of fi along x1, and at the point, so there is some point in between this 0 and h1. In fact, at this in between this point, there is some point here at which this mean value theorem is satisfied, and this point can be written x0 plus ti e1. यहाँ पे x0 plus h1 e1 है, तो x0 और x0 plus h1 e1 के बीच में कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे मीन वैल्यू थ्योरम आपका सेटिस्फाइड हो। तो आप चाहे इस तरह से ht यहाँ पे लिख लिया है, केवल h लिखिए, केवल t लिखिए, तो यहाँ t लाइज बिटवीन 0 to h कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ti लाइज बिटवीन 0 to h1 में लिखा है। ये i इसलिए लिखा है कि हर कंपोनेंट फंक्शन के लिए अलग अलग नंबर मिलेगा, किसी के लिए t1, i के लिए 1 के लिए t1 मिलेगा, 2 के लिए t2 मिलेगा, इसलिए ith कंपोनेंट के लिए मान लिया हमको ti रियल नंबर मिल रहा है which lies between 0 and h1. Is it okay? So I am writing actually the mean value analog of mean value theorem for ith component. So using, maybe this is just a, so using mean value theorem for this component, for component function fi, which is also function from u to rn, u to r. This is a function from u to r along this x1 coordinate, along x1 coordinate. So what will be its analog? That is, so this fi and x0 plus, केवल इसी को हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, this h1e1 minus fi x0, this is equal to del fi upon del x1, and at the point this x0 plus tie1 into h1 for some ti, for some ti lies between 0 and h1. So this is just the mean value theorem for this ith component function. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So now you see here, ये भी हमने यहाँ पे एक चीज लिखा था, ये चीज आप देखें कि
कोई भी किसी भी वेक्टर h के लिए जो इसका ith कंपोनेंट का जो मॉडुलस होगा दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नॉर्म. इट्स वेरी सिंपल टू सी फ्रॉम हियर. सो इसको हम यूज करेंगे और हम ये लिख सकते हैं. तो सिंस दिस del f I upon del x j, del f I upon del x j, this x0 plus ti e1 minus del f I over del x j at x0 modulus of this is always less than equal to. ये केवल हम यहाँ पे जो ये कंपोनेंट फंक्शंस हैं उन कंपोनेंट फंक्शंस की जगह पे हम पूरे फंक्शन को लिखना चाहते हैं. तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू del f अपॉन del x j x0 plus ti e1 and minus del f upon del x j at x0. So this is the norm. This will be with norm. राइट इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना. केवल यहाँ पे समझ लिया ith कंपोनेंट है किसी फंक्शन का ith कंपोनेंट और यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज लिखते हुए हम fi के जगह पे पूरा हमने f लिख दिया है. यहाँ पे ये जो ith कंपोनेंट है that will the modulus of the ith component is always less than equal to the norm of the whole function. Is it okay? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now you see here from this expression, this del f upon del xj at the point x and del f upon del xj, instead you take this equation. तो इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए. इक्वेशन नंबर 1. So from 1, whenever your x is in this ball, इस बॉल में कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हैं उस पॉइंट पे पार्शियल डेरिवेटिव माइनस x0 पे पार्शियल डेरिवेटिव का नॉर्म इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन nm. तो यहाँ पे आप देखिए ये x0 प्लस ti e1 वो बेसिकली उस बॉल के अंदर ही है, उस बॉल के अंदर है. तो इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव एट द पॉइंट inside the ball and minus del f upon del xj at the point x0, they should be less than epsilon upon nm using equation number 1. Using equation number 1. Right? Is it okay? Equation number 1 से आप लिख सकते हैं क्योंकि ये x0 plus ti e1 पॉइंट जो है वो x1 कोऑर्डिनेट के अलांग केवल आप ti डिस्टेंस चल रहे हैं, जहां ti जो है वो जो h वेक्टर था उसके फर्स्ट कंपोनेंट से भी कम है. So definitely this point lie inside this open ball. Right? Okay. Now I'm considering this expression. So see here. This fi x0 plus this h1 e1 minus fi at the point x0 and minus this del fi upon del x1 at x0 and into h1. So consider this expression. fi x0 plus h1 आप यहाँ भी ऊपर ही लिखिए, सॉरी जहां भी हम कंपोनेंट लिख रहे हैं वो कंपोनेंट में सफिक्स हम ऊपर लिख रहे हैं, तो h1 यहाँ भी ऊपर लिखिए h1 e1. तो x0 plus h1 e1 minus fi x minus fi x0. Yeah, sorry, this is x0. This is x0. fi x0. So this is actually equal to this expression del fi upon del x1 x0 plus ti e1. So this is exactly equal to, अगर आप ये इस इक्वेशन नंबर 2 का यूज करें, यू कैन राइट इक्वेशन नंबर 2 हियर. तो यूजिंग 2, ये फर्स्ट 2 टर्म के जगह पे आप लिख सकते हैं del fi upon del x1 and x0 plus ti e1.
So this will be your del fi upon del x1 and x0 plus TIE1, और यहाँ भी है del fi अपॉन del x1 एट x0, h1 यहाँ भी है, h1 यहाँ, तो h1 को आप दोनों में कॉमन कर लीजिए, तो हो जाएगा del fi अपॉन del x1 at x0 and you take h1 common from both the terms, right? Now you use, हाँ yes, सही लास्ट वाली लाइन एक बार समझा दीजिए। ये लास्ट वाली लाइन में है कि हम इस एक्सप्रेशन को कंसीडर कर रहे हैं fi x0 प्लस h1e1 माइनस fi x0 माइनस del fi अपॉन del x1 x0 h1। तो ये फर्स्ट जो टू टर्म्स का डिफरेंस हम यहां से लिखना चाहते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से fi x0 प्लस h1e1 माइनस fi x0 इज इक्वल टू del fi अपॉन del x1 x0 प्लस TIE1। एग्जैक्टली हमने उसको कॉपी कर दिया यहाँ पे इनटू h1, और यहाँ भी इस थर्ड टर्म में भी del fi अपॉन del x1 x0 इनटू h1, h1 को दोनों में हमने कॉमन कर लिया और कुछ नहीं, केवल इसकी वैल्यू यहां से रखिए और h1 को दोनों में कॉमन करिए। अब ये जो इसमें दो टर्म है, मॉडुलस ऑफ दिस इनटू मॉडुलस ऑफ h1, बट मॉडुलस ऑफ दिस फर्स्ट टर्म यू सी फ्रॉम हियर del fi अपॉन del xj and x0 plus TIE1 minus del fi upon del xj x0, so this is less than epsilon upon nm। तो इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है this will be less than epsilon upon nm, so epsilon upon nm into modulus of h1, so this is strictly less than epsilon upon nm into modulus of h1। Is it okay? केवल हमने ये एक्सप्रेशन कंसिडर किया है और इस एक्सप्रेशन के फर्स्ट टू टर्म को हमने इस इक्वेशन नंबर 2 के हेल्प से लिखा है, और इन दोनों में h1 को हमने कॉमन करके ये जो टर्म मिला है इस टर्म की वैल्यू हमने इस इक्वेशन नंबर, इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 3 कर सकते हैं। सो यू राइट यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 यू कैन राइट दिस एज epsilon upon nm into modulus of h1। Is it okay? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now, so summing, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि summing this type of basically this is true for every I. This is true for every I. So I am summing all those terms for different I's. So what will you get? What will you get? So suppose this is a rough part. So I'm doing here some rough calculation, then we'll come on the next page. So suppose you get different, in fact, an expression for different I, and I'm using this thing. So this modulus of a vector, say y, suppose y has component y1, y2, ym. So this norm of y is always less than equal to modulus of y1 plus modulus of y2 plus dot dot modulus of yn. Is it okay? Norm of y is always less than equal to modulus of y1, modulus of y2, modulus of y. You just use the triangular inequality. Actually, this can be written as y1 e1 plus y2 e2 plus yn en। आप केवल 2 डायमेंशन में इसको समझने की कोशिश पहले करिए। सपोज y इज इक्वल टू y1 y2, तो इसको लिख सकते हैं y1 e1 plus y2 e2। Now what is your norm of y? Norm of y is norm of this plus this. So norm of y1 e1 plus y2 e2. Now norm of a plus norm of b, use triangular inequality. So norm of y1 e1 plus norm of y2 e2. But norm of y1 e1, y1 is a scalar. y1 you can take outside. So this is modulus of y1 and norm of e1. e1 is a unit vector, so 1 and plus y2. So in a similar way, you can also write for general n-dimensional vector, this norm of y should be less than equal to norm of y1, y2, yn, or ym, sorry.
Is it okay now? So using this fact, Yes, sir. so using the fact, this norm of y, so is less than equal to norm mod of y1 plus mod of y2 plus dot dot mod of ym for any y in Rm. If you take any vector here, the norm of y is less than equal to sum of the modulus of its component. Okay. So now I am writing the norm of a vector corresponding to which this is the ith component, that is fx0 plus h1 e1 fx0 minus del f upon del x1, etc. So सर each x1 x2 के लिए e1 e2 भी तो चेंज हो रहा है ना? कोई बात नहीं, e1 e2 en तो ये यूनिट सर तो यहाँ पे जो लास्ट लाइन से ऊपर वाला लाइन में सर वहाँ पे शायद यही होगा क्या? ये वाला चीज यहाँ आप कह रहे हो? नहीं यहाँ पे सर नीचे से जो यूजिंग वन वाला जो लाइन है नीचे से ऊपर वाला, हाँ उसमें ei होगा क्या सर वहाँ पे? ei पे सर यूजिंग विच टर्म? यही टर्म जहाँ से ये टर्म ये जो सेकंड बट वन जो लास्ट से सेकंड बट वन है. ओके. सो हाँ, यहाँ पे क्या बता रहे हैं? ये E1 की जगह EJ होगा? नहीं. यहाँ पे सर उसके लेस देन इक्वल टू सर कहीं पे ei या EJ वाला टर्म मेंशन नहीं है, तो हर के लिए अलग-अलग हो रहा है. अभी केवल हम यहाँ पे E1, यहाँ पे इससे कंफ्यूज ना हो, ये एक अलग से हमने इसको आपको एक्सप्लेन किया है कि किसी जनरल वेक्टर y के लिए इसका नॉर्म उनके मॉडुलस के कंपोनेंट के मॉडुलस के सम से लेस होगा. दैट इज अनदर पार्ट. इसको आप इससे कोरिलेट ना करिए. यहाँ पे केवल हमने मीन वैल्यू थ्योरम अभी x1 कंपोनेंट के लांग कैलकुलेट किया है. अभी केवल जो भी मैं कर रहा हूँ केवल x1 कंपोनेंट के लांग कर रहा हूँ. फिर इस पूरे ये जो वेक्टर f मिलेगा उसका भी अभी हम एक तरह कह लीजिए एनालॉग ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आई एम स्टडीइंग अलोंग x1 कंपोनेंट. अब इसके बाद अभी हम फिर x2 कंपोनेंट x3 कंपोनेंट के लिए आएंगे. राइट. तो सो फार आई एम ओनली स्टडीइंग अलोंग x1 कंपोनेंट. राइट. यहाँ पे बिल्कुल E1 है, कहीं भी हमने E2 E3 अभी यूज नहीं किया. अलोंग हम केवल अभी x1 कंपोनेंट यूज कर रहे हैं. ओके. सो अब यहाँ पे ये जो fi है वो ith कंपोनेंट ऑफ दिस फंक्शन है. अब इसके जगह पे हम पूरे फंक्शन को लिखना चाहते हैं कि नॉर्म ऑफ द function corresponding to this expression for which is the ith component. So if you sum all these components, it will be bigger than equal to actually the value of the function. So basically the norm of जो उसके corresponding function आपको मिलेगा वो मैं लिख ले रहा हूं पहले. This f and x0 plus h1 e1 h1 हम ऊपर से कोऑर्डिनेट हम स्टडी कर रहे हैं. तो x0 plus h1 e1 minus fx0 and minus del f upon del x1 at the point x0 into h1 norm of this which is less than equal to, आप यहाँ पे चाहो तो जैसे वहां ये सम आपने लिखा है ना, सभी के सम आप लिख सकते हो. दिस इज मॉडुलस ऑफ इनफैक्ट दिस fi, मॉडुलस ऑफ दिस fi and x0 plus h1 e1 माइनस fi. केवल यहाँ पे कंपोनेंट यहाँ पे f है और यहाँ पे मैं कंपोनेंट कर दिया. केवल इसको आप एग्जैक्टली इस रिलेशन को यूज करिए. ith कंपोनेंट एट द पॉइंट x0 एंड माइनस del fi अपॉन del x1 एट द पॉइंट x0 into h1 मॉडुलस ऑफ दिस. ये x1 है. दिस इज सिंपली x1. राइट. लेकिन इसमें कितने टर्म्स हैं? I varies from 1 to m. I varies from 1 to m.
और ये हर टर्म जो है फॉर ईच आई, रिमेंबर हियर फॉर ईच आई दिस इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन nm इनटू मॉड h1। तो ऐसे आपको m टर्म्स मिलेंगे, तो बेसिकली ये m से m कैंसिल होगा एंड फाइनली यू विल गेट, सो दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन this epsilon mod h1 upon n, right? Yes, sir. Okay. So yes. Yeah. h1. So, but you see here, this h1 is the first component of the vector h. So its modulus is actually less than equal to this epsilon upon n and is less than equal to norm of h. Norm of h, that is norm of x minus x0. Right? Is it okay? Yes, sir. Okay. Now, so just like this first coordinate, you can now apply in second coordinate. तो अगर इसी तरीके से आप सेकेंड कोऑर्डिनेट को, जैसे यहाँ पे आप इस तरह समझें कि मान लीजिए आपके पास फॉर इंस्टेंस यू कैन थिंक ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स। ये आपका x0 पॉइंट है, यहाँ पे पहले आपने x1 एक्सिस है, ये आपका x2 एक्सिस है, ये आपका x3 एक्सिस है, राइट? तो आप सबसे पहले x1 कोऑर्डिनेट के लॉन्ग आपके ये पॉइंट आपको मिल गया x0 प्लस h1 e1। नाउ यू आर हियर, you consider on this line. So derivative along, partial derivative at this point along x2 axis, and then you reach at this point with coordinate x0 plus h1 e1 plus h2 e2, and again we'll proceed to differentiate, consider the partial derivative of the function along this third coordinate. So we start from this point x0 plus h1 e1 plus h2 e2, and will end up to this x0 plus h1 e1 plus h2 e2 and plus h3 e3 and so on. In a similar way you can proceed for n dimension. So now I'm considering along this straight line, along this coordinate, so that is parallel to your x2 coordinate. So you just apply parallelly to start, instead of the point x0, we start at the point x0 plus h1 e1, and our terminal point is x0 plus h1 e1 plus h2 e2, and do the same calculation you will get. So in a similar way, if we proceed, you will get this f x0 plus h1 e1 plus h2 e2 and minus fx0 plus h1 e1 and minus, now here your partial derivative will be along second coordinate x2, and at the point say x0 and here h2, and this will be less than equal to again this epsilon upon n and norm of x minus x0. And furthermore, if you write the last term at the point, so your terminal point is here x0 plus h1 e1 plus h2 e2 plus dot dot hn वो ऊपर होगा ना, h1 h1 का। हाँ वो सफिक्स आप ऊपर हर जगह लिखिएगा, हमसे मिस्टेक हो जाता है कई बार। आप h1 जहाँ h का सफिक्स है वो ऊपर आप सफिक्स लिखिए, h1 e1 h2 e2 plus hn en and minus this fx0 plus h1 e1 plus dot dot hn minus 1 en minus 1 and minus del f upon del xn, लास्ट कोऑर्डिनेट में हम हैं यहाँ पे,
del f upon del xn at the point x0, and here is your hn, and norm of this यहाँ भी है, norm of this will be less than equal to epsilon upon n norm of x minus x0. Okay. So now if you sum all these inequalities, अगर इन सभी inequalities को आप sum करें तो आपको क्या मिलेगा? So you will get this norm of this fx0 plus h1e1 plus h2e2 plus hn आपको मिलेगा x0 plus h. This is actually h. x0 plus h. और आप देख सकते हैं कि ये टर्म जो है आपका इसके पिछले वाले से कैंसिल होगा, इसके पहले वाला से कैंसिल होगा, एंड यू विल गेट ओनली दिस minus fx0 and minus you sum all these partial derivatives. So you will get here this del f upon del xj at the point x0 and hj, and sigma j varies from 1 to n. Del f upon del xj, x0 and hj. Yes. And when you sum all the terms here, you will get n terms on right hand side. So epsilon upon n into n, and then cancel out, and you will get, I think everywhere you can take this strict inequality rather than this less than equal to. You can take strictly less than everywhere, because yes, it should not be less equal. It is actually strictly less than. It is actually here strictly less than. So yes. So this is strictly less than epsilon norm x minus x0. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And what it means? So this fx0 plus h minus fx0, maybe you divide by x minus norm x minus x0, so we'll get norm of this quantity will be less than epsilon. So you got a neighborhood of the point x0 such that whenever you take a point x in a small neighborhood of the point x0, norm of this divided by norm of x minus x0 is strictly less than epsilon, and therefore this quantity may be regarded as a derivative of the function. So therefore this f dash x0 at the point h is nothing but this partial derivative and multiplied with this component hj, right? So therefore this f dash x0 at the point x0, when acts on this h, you will get nothing but this del f upon del xj at the point x0 and multiplied with the component hj, and j varies from 1 to n. So this is the final expression, and this proves that your function is differentiable whenever you assume the continuity of the partial derivative. Is it okay to everybody? इसको आप लोग एक बार दो बार पढ़िएगा, ये चीजें थोड़ी सी इन्वॉल्व हैं इसमें, लेकिन जो क्रक्स है वो आपको जानना चाहिए. क्रक्स ये है कि जब भी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और कंटिन्यूअस होगा, केवल mere existence of partial derivative may not imply the differentiability of the function. But this theorem says that if a function, if all the partial derivative exist and continuous at the point, then function is differentiable. And in fact, the derivative of the function can be written in the form of the partial derivative of the function. So this is the main result, and you can find this proof in several books, in particular in Rudin book. So I think today I should close it because it's already over. नेक्स्ट टर्न पे जब भी हम लोग मिलेंगे तो हम जो मेन रिजल्ट है इस चैप्टर का, जो कि इसको हम कहते हैं इनवर्स फंक्शन थ्योरम, उसका कुछ प्रिपरेशन करेंगे और फिर उसको हम लोग प्रूव करेंगे. तो विल मीट ऑन नेक्स्ट टर्न. इन द मीन टाइम अगर आप लोगों के पास कोई टाइम स्लॉट खाली होगा तो आप लोग अशोक से डिस्कस करके कुछ ट्यूटोरियल के जो क्वेश्चंस हमने कहा था उसको आप लोग डिस्कस कर सकते हैं. मे बी
अगर कोई और दिन नहीं तो संडे के दिन आप सोच सकते हैं। तो विल मीट ऑन मंडे with the preparation of inverse function theorem. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.